Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Hello and welcome. Today in this video we are going to solve the 2018 paper of class 11th mathematics, and we are going to solve the questions that are from our chapter number 6, quadratic equation. So first of all we have the question number 20 from this chapter. A quadratic equation has rational coefficients, and if one of its root is 1 plus square root 2, we have to find the sum of root. So हमारी जो quadratic equation है ax square plus bx plus c is equals to 0. और इस इक्वेशन में हमारे पास जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं, अगर तीनों रैशनल कोफिशिएंट्स हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है इस इक्वेशन से, जो रूट आता है एक, वो है अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2. और अगर इस तरह का हमारे पास एक रूट आ रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, सो डेफिनेटली द अदर रूट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2. सो ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स. सो सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 1 plus square root 2 plus 1 minus square root 2. So root 2 and root 2 will be cancelled out. So alpha plus beta, that is the sum of root, will be equals to plus 2. So option A is the right answer. Then let's see the question number 21. The solution set of this equation will be. So the equation is 2x square plus 1 over 2 is equal to 0. And let's shift this 1 over 2 to the other side of this equation. So 2x square will be equals to minus 1 over 2, and x square will be equals to minus 1 over 4. By taking square root on both sides, we will get x is equals to minus 1 over 4 with the square root. So the result will be equals to 1 over 2 iota with a plus minus sign. So the values of x, or the solution set of this quadratic equation, is iota over 2 and minus iota over 2. So the correct answer for this question number 21 is option D. Now let's see question number 22. The nature of the roots of this quadratic equation will be, where b belongs to the integers. So nature of root के लिए we know that we have to find the discriminant of this quadratic equation, that is equals to b square minus 4ac. So b square minus 4ac अगर हम solve करते हैं, so from this equation value of a is equal to 1, b is equals to minus 2b and c is equals to b square. So discriminant जब हम calculate करते हैं, so value of b is minus 2b and value of a is 1 and value of c is b square. So discriminant हमारा equal हो जाएगा 4b square minus 4b square. So as we can see, the discriminant of this quadratic equation is 0. So from that we can state that the roots of this type of quadratic equation in which discriminant is 0, that means that the roots will be same and real. So the correct answer will be option A, that the roots of this equation will be real and equal. Now let's see the question number 23.
If 1 omega and omega square are the cube roots of unity, we have to find the value of omega square into omega cube plus 1. So let's solve this multiplication first. So we will get omega 5, or before solving this, let's substitute omega cube is equal to 1. Omega cube is equal to 1. So omega square multiplied by 1 plus 1. So this will become omega square plus 1, and omega square plus 1 is equal to minus omega. So the correct answer for this question will be option B. So here we have one other question from this same chapter, quadratic equation. For this quadratic equation, if the sum of roots is equal to the product of root, so we know that sum of roots is minus b over a, and the product of root is equal to c over a. And the question states that if sum of roots and product of roots, if the sum of root and product of root is same, or we can say mathematically that b over a is equal to c over a. A and a will be cancelled out, so minus b will be equals to c, or we can say that b plus c is equal to 0. So for an equation in which sum of roots and product of roots are equal, so the b plus c will always be equal to 0. So option A is the right answer. So now here we have the 2018, and this is the paper 2, and we are going to solve question number 7 that belongs to the quadratic equation. So we have got two parts. So first of all हम first part को solve करते हैं. So यहाँ हम solve करते हैं first part को. So first part के अंदर हमारे पास एक fourth order equation given है, that is x4 minus 7x cube plus 12x square and minus 7x plus 1 equals to 0. If we can remember, this type of equation is a reciprocal equation, और reciprocal equation को solve करने के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि we will divide this equation by x square. So x square से divide करने के बाद हमारे पास जो expression आ जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x square minus 7x plus 12 minus 7 over x plus 1 over x square is equal to 0. So next हम next step में in terms को थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं, like x square plus 1 over x square minus 7x minus 7 over x plus 12. So कुछ इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को हमारे रीअरेंज कर लिया. देन मिडल वाली जो टू टर्म्स हैं उसे हम वहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ हम x प्लस 1 अपॉन x को अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल्स टू y. सो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इन दिस वे विल बी इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2. सो इस सब्स्टिट्यूशन को जब हम प्लेस करते हैं यहाँ पर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होकर कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे सो इट विल बिकम वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 and the linear factor of this equation will be y minus 5 and y minus 2. So in this way values of y will be y equals to 5 and y is equal to 2. So यहाँ हमारे पास values of y आ गई. Then हमारी जो assumption थी that x plus 1 over x is equal to 5 and x plus 1 over x equals to 2. So हमने दोबारा से resubstitute कर दिया for the values of y. इसे जब हम solve करेंगे further we will get x square minus 5x plus 1 equals to 0 और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हो गई. एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जब हम इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सो फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 0.208. मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर्स लिख रहा हूँ बट मेथड मैंने बता दिया कि इन दो इक्वेशंस पे हम दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो हमारे पास x के दो रिजल्ट्स आ जाएंगे 0.208 एंड x विल बी इक्वल्स टू 4.791. सिमिलरली जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1. सो इस तरह से हमारे पास 4 रूट्स आ गए फॉर द इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन गिवन थी. नाउ लेट्स सी द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो पार्ट बी को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 16 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 6. सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो इन दो इक्वेशंस में सेकेंड इक्वेशन से वी कैन say that y is equals to 6 minus 3x. इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर प्लस 2y. सॉरी y को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं तो y की जगह हम लिख देते हैं 2 इंटू 6 माइनस 3x minus 16 is equal to 0. Then फॉर्मूला के थ्रू एक्सपेंड करते हैं और उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में हम दो काम करेंगे. फर्स्ट एक काम तो हो जाएगा, हम यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6 3s are 18 and 18 2s are 36. 36x plus 12 माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो हमने इस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और 6 माइनस 3x होल स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सो यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के बाद हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी इट विल बी 10x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग a विल बी इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 42 एंड वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल्स टू 32. सो इन दिस वे हमारे पास x के दो रूट्स आ जाएंगे. x विल बी इक्वल्स टू 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू 3. सॉरी
x will be equals to 1 and x will be equals to 3.2. तो ये हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दो इक्वेशंस को जब हम दो वैल्यूज ऑफ x को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन b के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, ताकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, तो यहाँ हम x की वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे। जब हम x को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y आ जाता है इक्वल्स टू 3, और जब हम x को 3.2 पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा -3.6। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x और y की। सो हम यहाँ पर जब सोल्यूशन सेट फॉर्म करेंगे तो हम अपने आंसर को शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। सो हमारे पास जो रिजल्ट फर्स्ट आ जाएगा 1 हो जाएगा 1,3, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा 3.2, -3.6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। देन इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें प्रूफ करना है दैट ओमेगा 7 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ये +b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो वी विल गेट ओमेगा टू द पावर 14 + 1 + 2 ओमेगा 7, और ओमेगा 14 को जब हम ब्रेक करते हैं, सो लेट्स से ओमेगा 3 to the power of 4, 4 3s are 12 into omega 2 plus 1 plus 2 into omega 7 means omega 3 raised to the power 2, that is omega 6, and into omega. So omega cube is equals to 1 whole power 4 into omega square plus 1 plus 2 into omega 3 is 1 to the power 2 times omega. So 1 raised to the power 4 is 1, so it will become omega square plus 1 plus 2 omega. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। So we know that omega square plus 1 that is equal to minus omega. So minus omega को replace कर देंगे, so it will become minus omega plus 2 omega. That will be equals to omega, that is the right hand side of the equation जो हमें prove करना था. So this is the answer for this question number 7 from quadratic equation. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to